Who among the following defeated the Marathas in the third battle of Panipat? Which option is the right answer? Third battle of Panipat रे निम्नलिखित मध्यरु किए मराठा मानकु परास्त करथिले? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत रे मराठा मानकु किए परास्त करथिले? व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर? ऑप्शन बी हेबो यार राइट आंसर. ओके, अहमद शाह अब्देली. अहमद शाह अब्देली मराठा मानकु थर्ड बैटल ऑफ पानीपत रे परास्त करथिले. ऑप्शन बी समस्त चूज करछन्ती. ऑप्शन बी हेबो यार राइट आंसर. नेक्स्ट, how many digits are there in the India Financial System Code जाकु IFSC कहजे? IFSC रे आपनकर केतोटी डिजिट रहउछ? IFSC रे आपनकर केतोटी डिजिट रहउछ? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड रे 11 टी डिजिट रहउछ. आपण बैंक पासबुक रे देखिया पय पाइबे. ठीक अछि, दैट इज आपनकर 11 डिजिट रहउछ. इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड 11 टी डिजिट एथिरे रहउछ. नेक्स्ट, the convention on migratory species is also known as migratory species मानक पई गोटे जो कन्वेंशन हितला गोटे चुक्ति बा सम्मेलन को एटा को कोन कहै जिवो? एटा को कहै जिवो बॉन कन्वेंशन. ऑप्शन सी मन रखिबा, बॉन कन्वेंशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. The Sardar Sarovar Dam is constructed across which Indian river? ठीक अछि, केउ भारतीय नदी उपरे सरदार सरोवर डैम को निर्माण करा जायछि? ट्राई करंतु. सरदार सरोवर डैम इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस व्हिच इंडियन रिवर? रिवर नर्मदा. ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर. नर्मदा नदी उपरे कोन सरदार सरोवर डैम को निर्माण करा जायछि. नेक्स्ट क्वेश्चन, in which year did the Chauri Chaura incident take place during British rule? British शासन समय रे चौरी चौरा एक इंसिडेंट होइतिला. यहा केउ मसियार होइतिला? प्रश्न पचार जाउछि. चौरी चौरा इंसिडेंट केउ मसियार होइतिला? 1922 मसियारे. ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर. 1922 मसिया मन रखंतु. नेक्स्ट, when was the first 5-year plan started? प्रथम 5 वार्षिक योजना को केउ मसिया आरंभ करा दितला? प्रथम 5 वार्षिक योजना को 1951 1951. ऑप्शन बी वो यार राइट आंसर आरंभ करा जाइतला. नेक्स्ट, who among the following wrote the famous book Economic History of India? ट्राई करंतु. इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया एही पुस्तकटीर लेखक किए अटंती? याकू किए लिखिथिले? याकू किए लिखिथिले? ऑप्शन डी आरसी डॉट याकू लिखिथिले. आरसी डॉट हेबो यार राइट आंसर. नेक्स्ट, इन इंडिया द ऑपरेशन फ्लड इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ऑपरेशन फ्लड आपनकर कहा सहित जडित अटे? ऑपरेशन फ्लड व्हाइट रिवोल्यूशन मींस मिल्क प्रोडक्शन सहित जडित अटे. मिल्क प्रोडक्शन हो यार राइट आंसर. ऑप्शन बी. नेक्स्ट, which constitutional amendment act added the right to form cooperative societies to part 3 of the Indian constitution? यह आपनकर केउ संविधान संशोधन नियम रो अंतर्गत अटे जहा कोन राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी आपण समवाय समिति जहा को जाय आपण गठन करि परिबे जहा पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे वर्णना करा जायछि. तो यह थिला आपनकर 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 97तम संविधान संशोधन नियम जरिया. ऑप्शन सी हेबो यार राइट आंसर. नेक्स्ट, which of the following countries has the longest coastline in the world? वर्ल्ड कथा कुआ जाउछि. वर्ल्ड रो केउ देश पाखरे सबुठारु अधिका कोस्ट लाइन रहिछि मींस उपकूलवर्ती सीमा रहिछि? दैट इज ऑप्शन ए कनाडा हेबो. यदि हमें भारत परिप्रेक्षी रे कथा बा गुजरात पाखरे रहिछि लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, बट वर्ल्ड रो कनाडा पाखरे रहिछि. मन रखंतु. नेक्स्ट, ड्यूरिंग द अर्ली 19th century खासी रिवोल्ट इन मेघालय वाज लीड बाय? ठीक अछि, जहा आपनकर
अर्ली 19th सेंचुरी रे खासी विद्रोह होइतिला यह केउठारे होइतिला यह मेघालय ठारे होइतिला यार नेतृत्व किए नैथिले यार नेतृत्व किए नैथिले ऑप्शन डी टिरोट सिंह हबो यार राइट आंसर नेक्स्ट द concept of fundamental duties in the Indian constitution was taken from फंडामेंटल ड्यूटीज जाको मौलिक कर्तव्य कहा जाए एही कांसेप्ट टी केउ संविधान रु अना जाइछि फंडामेंटल ड्यूटी यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन रु अना जाइछि ऑप्शन सी हैव राइट आंसर नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द सूर्यवंशी गजपति एम्पायर कहंतु सूर्यवंशी गजपति एम्पायर रो फाउंडर प्रतिष्ठाता किए अटंती याकू किए प्रतिष्ठा करथिले याकू प्रतिष्ठा करथिले कपिलेंद्र देव ऑप्शन बी कपिलेंद्र देव हिजो हेरो राइट आंसर नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन empowers the president to impose the president rule in the state रे कहा जाउछि ठीक अछि स्टेट रे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति शासन जारी करि परिबे यह वर्णना करा जाइछि आर्टिकल 356 रे ऑप्शन बी एबो यार राइट आंसर नेक्स्ट when was the second 5-year plan started in India कहंतु सेकंड 5-year plan को आरंभ करा जाइतला 1956 रे ऑप्शन सी हेबो यार राइट आंसर नेक्स्ट the subject citizenship is mentioned in which of the following list of the 7th schedule of the Indian constitution भारतीय संविधान रो 7th schedule रे citizenship वर्णना करा जाइछि तो एटा केउ लिस्ट रो अंतर्गत आसीबो एटा आसीबो आपनकर यूनियन लिस्ट केंद्र तालिका रो अंतर्गत अटे यूनियन लिस्ट नेक्स्ट the thickness of the ozone layer is measured in terms of which of the following unit ओजोन लेयर रो थिकनेस को मेजर करा जाए दैट इज ऑप्शन होची यार यूनिट एकक कोन ऑप्शन मन रखंतु ऑप्शन ए नेक्स्ट द प्रजामंडल इन नयागढ़ वाज कॉन्स्टिट्यूट ऑन 6th June 1938 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ तो यार नेतृत्व के नैथिले 1938 मसिया रे होइतिबा नयागढ़ रो प्रजामंडल जो हितला गठन करा जाइतला यार नेतृत्व के नैथिले नारायण नंद ऑप्शन सी है राइट आंसर नारायण नंद मन रखंतु नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन इंडिया इज फॉर्म्ड ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी जोगु केउ हृदयटी आपनकर गठन होइछि दैट इज उल्लूर लेक ऑप्शन बी उल्लूर लेक हम राइट आंसर नेक्स्ट रिवर एटा आपनकर कोन पियान गंगा रिवर पियान गंगा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर पियान गंगा केउ नदी रो एक ट्रिब्यूटरी अटे केउ नदी रो एक ट्रिब्यूटरी हिजबो दैट इज रिवर गोदावरी ऑप्शन डी हैव राइट आंसर समस्त यूज करछन्ती नेक्स्ट व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स फोर्स्ड लेबर ठीक अछि फोर्स्ड लेबर को प्रोहिबिट करूची दैट इज आर्टिकल 23 ऑप्शन बी हैव राइट आंसर आर्टिकल 23 नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज रिस्पांसिबल फॉर इटाई डिजीज इटाई डिजीज पाई निम्नोक्त मध्यरु केउ एलिमेंट्स केउ मौलिक रिस्पांसिबल अटे दैट इज कैडमियम ऑप्शन ए कैडमियम हेबो यार राइट आंसर नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स वाज रिगार्डेड एज द देशबंधु नाम रे के जणा जानती देशबंधु नाम रे जणा जानती चित्तरंजन दास देशबंधु चित्तरंजन दास नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज द लार्जेस्ट freshwater lake in India largest freshwater lake in India that is option B Ullur lake option B Ullur lake is the right answer where is the headquarters of the State Bank of India located कहंतु SBI State Bank of India रो हेडक्वार्टर रहिछि मुंबई रे option D Mumbai is your right answer when was the first Anglo-Sikh war fought प्रथम एंग्लो-सिख वार लढा जाइतिला 1845 to 1846 मध्ये ऑप्शन बी हैव अ राइट आंसर नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स लुक्स येलो व्हेन इट ऑकर्स इन हाइड्रेट फॉर्म निम्नोक्त मध्यरु केउ मृत्तिका ताहा येलो लुक रो देखा जिवो जेतबे सेटा हाइड्रेट फॉर्म हबो दैट सॉइल इज रेड सॉइल लाल मृत्तिका रेड सॉइल हबो राइट आंसर नेक्स्ट
Which among the following countries does not share its border with Red Sea कहंतु निम्नलिखित मध्यरु केउ देश तार सीमा को रेड सी सहित बंटन करू नाही that is Ethiopia. Ethiopia option D have a right answer. Next question. Which among the following institution release the All India Consumer Price Index numbers for industrial workers? निम्नलिखित मध्यरु केउ अनुष्ठान रिलीज करे All India Consumer Price Index numbers for industrial workers मानक पई तो से अनुष्ठान होचे Labor Bureau. Option D Labor Bureau have a right answer. Next. Which of the following parts of the Indian Constitution was described as the noble future of the Indian Constitution by Dr. B.R. Ambedkar? ठीक अछि निम्नलिखित मध्यरु केउ पार्ट को नोवेल फीचर्स भाबरे B.R. Ambedkar वर्णना करथिले ताहातले आपनकर पार्ट 4 of the Indian Constitution. It means DPSP. Next. The right to property was removed from the part 3 of the Indian Constitution. So which constitutional amendment act मने रखंतु एमिति प्रश्न परिहार आसीबो राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव करा जायछि फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रु तातले आपनकर 84 तम संविधान संशोधन नियम 1978 ऑप्शन सी हेबो यार राइट आंसर. ओके नेक्स्ट. When was the All India Khilafat Conference held in 1919 रे All India Khilafat Conference हितला आपनकर दिल्ली थारे Delhi is where right answer option B. Next. Who is called as Frontier Gandhi? Frontier Gandhi भाବରେ किए जाना जानती Frontier Gandhi भाବରେ जाना जानती Khan Abdul Ghaffar Khan. Option A हबो यार right answer. Khan Abdul Ghaffar Khan. Next question. When was Niti Aayog formed in India? केउ मसिया रे नीति आयोग को गठन करा जायतिला 2015 मसिया रे नीति आयोग को गठन करा जायतिला. Next question. Which among the following countries is the largest producer of copper in the world? World रे अधिक परिमाण रे copper को produce करूची. Okay, that is Chile. Chile country is your right answer. Option A. Next. The concept of justice in the preamble of the Indian Constitution was taken from justice को adopt करा जायछि that is Russian Revolution. Option A. Russian Revolution have a right answer. Next. The Indian National Congress and the All India Muslim League signed the which part? That is Lucknow Pact. Lucknow Pact in 1916. Option D. Next. Atacama Desert is located in which of the following countries? Atacama Desert रहिछि आपनकर South America. Option D. South America have a right answer. Where is the headquarters of National Biodiversity Authority located in India? केउठारे National Biodiversity Authority रो हेडक्वार्टर मुख्यालय रहिछि that is रहिछि आपनकर चेन्नई रे तमिलनाडु रो चेन्नई रे रहिछि. आज लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40. On which of the following rivers is the Meteor Dam situated? Meteor Dam टा आपनकर रहिछि रिवर कावेरी रे. Option B have a right answer. Okay. Simon Commission was boycotted by Indians because यार कारण कोन हे परिबो कोंतु Simon Commission was boycott करा जायतिला भारतीय मानक द्वारा. ठीक अछि तो यार कारण मुख्य कारण कोन हे परिबो which option is your right answer? Simon Commission को boycott करा जायतिला कारण एथिरे कोन समस्त मेंबर्स ब्रिटिश थिले ब्रिटिशर्स माने ही समस्त मेंबर थिले केही मध्य इंडियंस मेंबर ले नाही. सो ऑप्शन C is your right answer. All its members were British. That's why Simon Commission को boycott करा जायतिला भारतीय मानक द्वारा. Option C is your right answer. Next. Which of the following hormones is responsible for the regulating of blood sugar levels in the human body? निम्नलिखित मध्यरु केउ हार्मोन्स रेस्पोंसिबल अटे ब्लड सुगर लेवल को ह्यूमन बॉडी रो ब्लड सुगर लेवल को रेगुलेट करिया पे. ऑप्शन सी इंसुलिन. इंसुलिन इज योर राइट आंसर. ओके इंसुलिन हबो. नेक्स्ट. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? निम्नलिखित मध्यरु केउटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रो गोटे फंक्शन हे परिबो नाही. रेगुलेटिंग क्रेडिट सप्लाई हे परिबो, मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एटा आल्सो हबो, फॉर्मुलेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी मध्ये कहि परिबा किंतु इटसेल्फ इशूइंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स हे परिबो नाही. तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर. ऑप्शन डी गोटिए आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रो फंक्शन
होई परिबो नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिस्कल डिफिसिट इन द यूनियन बजेट मीन्स कोन कोन? यूनियन बजेट रे फिस्कल डिफिसिट रो अर्थ कोन? या माने यहा आपण कोन बुझथि? फिस्कल डिफिसिट मीन्स कोन बुझथि? व्हिच ऑप्शन इज योर राइट आंसर? फिस्कल डिफिसिट मीन्स ऑप्शन बी, the excess of total expenditure over total receipts excluding borrowings. It means जदि हमें सिंपली बुझिबा कोन है फिस्कल डिफिसिट, सरकार ऋण को बाद दबा परे आवश्यकता पई केते खर्च करंती एवं एठारु जणा जाए सरकार आवश्यकता अनुसार खर्च करिबा पई केते ऋण करंती। तो एटा होची फिस्कल डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, which one of the following is not an effect of global warming? कहतु निम्नलिखित मध्यरु केउटा गोटे ग्लोबल वार्मिंग रो इफेक्ट हेई परिबो नाही? राइजिंग सी लेवल्स एटा हेई परिबो, एक्सपांशन ऑफ डेजर्ट एरिया एटा भी हेई परिबो, ठीक अछि, सो दैट वृष्टि देखा देबो नाही। इंक्रीज इन बायोडायवर्सिटी, तो इंक्रीज इन बायोडायवर्सिटी एंड मोर फ्रीक्वेंटली एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, तो एटा हेई परिबो। सो ऑप्शन सी इज योर right answer. Okay, that is not specifically an effect of global warming. So option C ebo here right answer. Next, the phenomenon of reverse osmosis is most commonly used in? reverse osmosis process को आपण केउठारे व्यवहार करिवार देखिया पई पाइबे? वाटर प्यूरिफिकेशन, ठीक अछि, वाटर प्यूरिफिकेशन पई रिवर्स osmosis प्रोसेस को यूज करा जाय, वाटर प्यूरिफिकेशन। Clear? Next question number 7, which of the following river flows through a rift valley? निम्नलिखित मध्यरु केउ नदी रिफ्ट वैली जरिया रे प्रवाहित अटे? रिफ्ट वैली flows through rift valley, river तापी। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ठीक अछि, तापी रिवर एबो हेरो राइट आंसर, रिवर तापी मने रखंतु। नेक्स्ट, the doctrine of lapse was primarily used by the British to? the doctrine of lapse लॉर्ड डेलहाउसी आई थिंक एटा को प्रयोग करथिले। प्राइमरीली यूज्ड बाय ब्रिटिश टू, ऑप्शन बी, annex territories without direct military conflict. It means doctrine of lapse कोन थिला? मुख्यतः जदि कथा बा जे राजांकर उत्तराधिकारी रहिबे नाही सेटा ब्रिटिश कंट्रोल को आसी जिवो ए राज्य। ओके, जदि हम सिंपली बुझिबा, ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, which of the following pairs is correctly matched with regard to ancient Indian dynasty and their capital? ठीक अछि, चोल मानकर मधुराई, चोल मानकर जदि हम कथा बा, जदि हम एक्चुअल तांकर कैपिटल विषय कथा बा, दैट इज तांजोर। सो ऑप्शन ए कटिबो। पल्लव मानकर तो कांचीपुरम, ठीक अछि, एटा ठीक लागुची। देन सातवाहनस रो मध्य तांकर कोन थिला? तांकर थिला प्रतिष्ठान एमिति कोन थिला। तो अमरावती भी अमरावती हेई पारे, बट हम जदि प्रकृत राजधानी विषय कथा बा ताहले ऑप्शन सी आल्सो कटुची, ऑप्शन बी हेबो यार राइट आंसर, ठीक अछि। पल्लव मानकर राजधानी होची कांचीपुरम, ठीक अछि, आंसर। नेक्स्ट, ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द क्विट इंडिया मूवमेंट जहा आपनकर 1942 मसिया होइतिला इज कंसीडर्ड यूनिक मेनली बिकॉज़ कोन? भारत छाड़ो आंदोलन 1942 मसिया होइतिला, considered unique mainly because कारण क्विट इंडिया मूवमेंट कोन थिला? डू और डाई, करबा मर। एहा परे एथिरे हिंसा रूप नैतिला। एटा जेतेबेले महात्मा गांधी को अरेस्ट करा जायतिला, देन एटा आपनकर नेतृत्व विहीन होइतिला एवं एटा हिंसार रूप नैतिला। सो ऑप्शन सी, इट लैक्ड नॉन वायलेंट डिसिप्लिन एंड सो आर्म्ड रेजिस्टेंस, ठीक अछि, बहुत भंगा रुजा मध्य होइतिला। सो ऑप्शन सी हेबो हेरो राइट आंसर। नेक्स्ट, which of the following is a chemical change? निम्नलिखित मध्यरु केउटा एक chemical change हबो? melting of ice, boiling of water, dissolving salt in water, rusting of iron गोटे chemical change होई जिवो। ऑप्शन डी, rusting of iron एक कोन chemical change अटे। नेक्स्ट, which of the following is not a component of air? nitrogen, oxygen, hydrogen and carbon dioxide. हाइड्रोजन कोइ परियो? हाइड्रोजन, ओके, बहुत मिनिमल। तो हाइड्रोजन गोटे माने एटा कंसीडर करि परिबा नाही गोटे एयर रो कंपोनेंट भाबरे। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फोकस एरिया अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम? आयुष्मान भारत स्कीम रो मुख्य
उद्देश्य होची गोटे हेल्थ इंश्योरेंस फॉर vulnerable groups. ऑप्शन बी इज वो हेयर राइट आंसर. हेल्थ इंश्योरेंस फॉर vulnerable groups is your right answer. Next question number 14. Which of the following committees recommended the implementation of GST in India? Goods and service tax को କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କମିଟି ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ? ऑप्शन ए केलकर कमिटी, ठीक है, विजय केलकर कमिटी. ऑप्शन ए हबो यार राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. Which of the following minerals is Odisha the leading producer of India? ओडिशा रो केउ मिनरल, ठीक अछि, गोटे लीडिंग प्रोड्यूसर अटे इंडिया रे क्रोमाइट. ऑप्शन सी क्रोमाइट पाखा बाकी 96%, ठीक अछि. नेक्स्ट, द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज राज्यसभा रो टर्म रहउछि 6 इयर्स, लोकसभा रो 5 इयर्स. ऑप्शन 2 हेबो यार राइट आंसर. नेक्स्ट, द बलवंत राव मेहता कमिटी वाज एसोसिएटेड विथ. बलवंत राव मेहता कमिटी कहा सहित जड़ित थिले? पंचायत राज सहित जड़ित थिले. ऑप्शन 3 पंचायत राज हेबो यार राइट आंसर, मन रखंतु. नेक्स्ट, when were the fundamental duties incorporated in the constitution? संविधान रे मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाइथिला 1976 रे. ऑप्शन 2 हेबो यार राइट आंसर. नेक्स्ट, the form of oath of office for a minister for the Union of India is enshrined in the, ठीक अछि, oath of office for a minister एटा को वर्णना करा जाइछि 8th schedule रे. तो ऑप्शन 3 हेबो राइट आंसर. नेक्स्ट, the mountain range which divides the north and south India, ठीक अछि, नॉर्थ एवं साउथ इंडिया को डिवाइड होचे विंध्यास माउंटेन रेंज. ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट, हायर एंड फायर इज द पॉलिसी ऑफ. हायर एंड फायर करबा एटा गोटे कैपिटलिज्म रो पॉलिसी अटे. कैपिटलिज्म इकोनॉमी रो एटा पॉलिसी अटे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. कंजप्शन फंक्शन एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड यार कोन इनकम को नै हमें कहै. ऑप्शन 2 इज योर राइट आंसर, इनकम एंड कंजप्शन. नेक्स्ट, poverty in less developed countries is largely due to इनकम रो इनइक्वालिटी जोगु कोन पॉवर्टी टा शो करि परिबा. दैट इज ऑप्शन 2 इनकम इनइक्वालिटी इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट, व्हिच यूनिट ऑफ वैल्यूएशन इज नोन एज पेपर गोल्ड. पेपर गोल्ड होची एसडीआर, जहा स्पेशल ड्राइंग राइट एसडीआर हेबो हेरो राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of bank's cash holding to its total deposit liability is called the cash reserve ratio. CCR को है cash reserve ratio है right answer. Option 2 समस्त चूज करछन. Next question, when Shah visited India during the reign of, ठीक अछि, कहार शासन काल समय रे when Shah भारत को भ्रमण करथिले? हर्षवर्धन. Option 3 is your right answer. हर्षवर्धन है right answer. Next, the विरूपक्षा टेम्पल वाज बिल्ट बाय द. विरूपक्षा टेम्पल को केउ माने निर्माण करथिले? चालुक्यस, ठीक अछि, चालुक्यन को द्वारा निर्माण करा जायतिला विरूपक्ष मंदिर. नेक्स्ट, ग्रेट स्तूप एट सांची इज इन. आपनकर जो सांची स्तूप रहिछि ता रहिछि मध्य प्रदेश रे. ऑप्शन 2 हेबो राइट आंसर, मध्य प्रदेश. नेक्स्ट, आर्यभट्ट एंड कालिदास वेयर इन द कोर्ट ऑफ व्हिच गुप्त एम्परर. ठीक अछि, केउ गुप्त एम्परर रो कोर्ट दरबार रे आर्यभट्ट एवं कालिदास सेमानकर गोटे मेंबर थिले चंद्रगुप्त 2. ऑप्शन 2 इज योर राइट आंसर, चंद्रगुप्त 2 हेबो राइट आंसर. नेक्स्ट, अशोक वाज ए किंग ऑफ व्हिच डायनेस्टी. से केउ डायनेस्टी रो राजा थिले? मौर्य डायनेस्टी. ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर, मौर्य डायनेस्टी. नेक्स्ट, द फेमस गिर फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन. गिर फॉरेस्ट रहिछि आपनकर गुजरात रे. ऑप्शन 3 हेबो राइट आंसर, गुजरात मन रखंतु. The most literate union territory in India is most literate कथा को जाउची लक्षद्वीप. ऑप्शन 2 लक्षद्वीप हेबो राइट आंसर. Where is the headquarter of the Botanical Survey of India located? कहंतु Botanical Survey of India headquarter रहिछि कोलकाता. वेस्ट बंगाल रो कोलकाता रे रहिछि Botanical Survey of India headquarter. Where is the Bandipur National Park located? कहंतु Bandipur National Park रहिछि कर्नाटक. ऑप्शन 3 कर्नाटक इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट, where is the Indian Institute of Petroleum located? Indian Institute of Petroleum located in Uttarakhand ro Dehradun re. Option 3 हेबो राइट आंसर.
The headquarters of the Odisha Olympic Association is located in Odisha Olympic Association ro headquarter रही कटक. Odisha रो कटक रे Odisha Olympic Association रो headquarter रही. Next, the Wheeler Island has been renamed as Wheeler Island को नामकरण करा जायछि अब्दुल कलाम आइसलैंड भाବରେ. Option 3 is your right answer. Which of the following is the highest literary award of Odisha? Odisha रो highest literary award होछि अति बड़ी जगन्नाथ दास award. Option B है यार right answer. Next question. In which year Odisha Sahitya Academy was established? Odisha Sahitya Academy को प्रतिष्ठा करा जायतिला 1957 मसिया रे. 1957 हमारा right answer. आज last question. The Right to Education Act 2009 was started in which year in Odisha? Right to Education Act 2009 को आरंभ करा जायतिला 2010 मसिया. Option B is your right answer. The procedure for the amendment of the Indian Constitution is given in which article? Procedure for the amendment, ठीक अछि, संशोधन कहार संविधान संशोधन रो जो प्रोसीजर रहिछि जो नियम रहिछि ताहा केउ आर्टिकल रे वर्णना करा जायछि. ताहा केउ आर्टिकल रे वर्णना करा जायछि? आर्टिकल 368 मन रखंतु. ऑप्शन ए आर्टिकल 368 रे अमेंडमेंट प्रोसीजर को वर्णना करा जायछि भारतीय संविधान रो. ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following rights was described by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of the Constitution? Dr. B.R. Ambedkar को मतरे भारतीय संविधान रो केउ अधिकार जहा हार्ट एंड सोल भाबरे से वर्णना करछ? भारतीय संविधान रो केउ अधिकार को से हार्ट एंड सोल भाबरे वर्णना करछ? ट्राई करंतु. Which option है राइट आंसर? ऑप्शन सी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. ऑप्शन सी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को डॉक्टर बी आर अंबेडकर हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भाବରେ से वर्णना करिसंती. नेक्स्ट, द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? 1857 मसियार जो विद्रोह होइतिला एहा केउ थारु आरंभ होइतिला? एहा मीरठ थारु आरंभ होइतिला. करेंटली इन उत्तर प्रदेश स्टेट रो मीरठ थारु 1857 मसियार विद्रोह आरंभ होइतिला. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? कोन इंडियन नेशनल कांग्रेस रो प्रथम सभापति किए थिले? भारतीय जातीय कांग्रेस रो प्रथम सभापति ऑप्शन बी उमेश चंद्र बनर्जी है यार राइट आंसर. ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which session of the Indian National Congress declared Purna Swaraj? It means complete independence as its goal. भारतीय जातीय कांग्रेस रो केउ अधिवेशन रे यहा घोषणा करा दितला पूर्ण स्वराज एक मुख्य गोल हेबो लाहौर सेशन. ठीक अछि, 1929 रो लाहौर सेशन रे यहाको वर्णना करा दितला. नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रेस्पॉन्स टू क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छाड़ आंदोलन को लॉन्च करा दितला. एटा काहे माने लॉन्च करा दितला एवं हमें कहि परिबा क्रिप्स मिशन रो फेलियर जोगु दैट इज लॉन्च करा दितला. सो रेस्पॉन्स टू क्रिप्स मिशन हबो यार राइट आंसर. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग गेव द स्लोगन साइमन गो बैक? साइमन गो बैक एही स्लोगन के दिथिले? एही नारा के दिथिले? साइमन गो बैक लाल लाजपत राय. ऑप्शन ए है राइट आंसर लाल लाजपत राय. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज ऑथराइज्ड टू इश्यू कॉइन्स इन इंडिया? देखंतु प्रश्न को जाउछि एथे कॉइन्स विषय रे. जेतेबेले आपनकर कॉइन्स आसीबो दैट इज आरबीआई होबो नै. कॉइन्स कथा आसीले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहबा. ऑप्शन 2 है राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इकोनॉमीज ऑफ scale means reduction in unit cost of production. Option 1 is your right answer. Unit cost of production mane rakhantu. Next question. A short term government security paper is called. What a short term ro government security paper को कौन कहजिबो? treasury bill कहजिबो. treasury bill. Option 4 है right answer. Next question. The spice garden of India is भारत रो spice garden भाबरे जाना जाय केरल. केरल is your right answer. Option 3. Next question.
The latitude passes through the northernmost part of India is northernmost part of India दे आपनकर केउ latitude pass करिचे 37 degree north. Option 3 होबो right answer. Next question. The oldest oil field in India is in oldest oil field कथा कुआ जाउची तो सेटा होची आपनकर दिग्बई Assam रे located. Digboi is your right answer. Okay. Next question. The northern part of west coast in India is known as west coast ro northern part को कहा जाए option 1 Concon coast. कौन है जो बेटा Concon coast is your right answer. Next. Which planet in our solar system is nearly as big as Earth? As big as Earth कथा कहा जाउची Venus. Option 3 Venus है यार right answer. Venus मन रखंतु. Next question. Which schedule of the Indian Constitution was added by the first Constitutional Amendment Act of 1951? 1951 रे प्रथम Constitutional Amendment Act प्रथम संविधान संशोधन नियम जरिया रे केउ शेड्यूल को केउ अनुसूची को भारतीय संविधान रे जोड़ा जाइतला ता थिला आपनकर 9th शेड्यूल. ऑप्शन बी 9th शेड्यूल हबो यार राइट आंसर. नेक्स्ट. Which of the following soil types is also known as ussara soils? निम्नलिखित मध्यरु केउ soil type को ussara soil कहि परिबा, that is saline soil. Option A saline soils is your right answer. Next question. Which among the following is a young fold mountain? निम्नलिखित मध्यरु केउटा एक young fold mountain अटे. Young fold mountain होची हिमालयस. ठीक अछि हिमालयस mountain. Option A. Next question. Chandra and Bhaga are two headward tributaries of which of the following rivers? Chandra एवं भागा दुईटा headward tributaries शाखा नदी अटंती river Chenab. Option D have a right answer. Chenab river is your right answer. Next question. In which year the Gaddar party was formed? Gaddar party केउ मसिया रे गठन करा दैतला. Gaddar party को 1913 मसिया रे गठन करा दैतला. Option C have a right answer. The Chief Justice of India is appointed by the Chief Justice of India नियुक्ति पांती President of India को द्वारा भारतर राष्ट्रपति को द्वारा appoint पांती. Next question number 22. The Garo, Khasi and Jayantia hills are located in which of the following states? Question कहूची The Garo, Khasi and Jayantia hills are located in which of the following state? Garo, Khasi and Jayantia hills are located in Meghalaya. Option 1 Meghalaya hobo yaro right answer. Next question. Which part of the Indian Constitution deals with official language? कुहंतु official language विषय रे भारतीय संविधान रो केउ भाग रे वर्णना करा जायछि. Official language विषय रे part 17 of the Indian Constitution. Option 1 होबो यारो right answer. Next question. Release of water from dams during heavy rainfall will causes extensive soil erosion of murtiga क्षय रो एक मुख्य कारण होई परिबो. Option 3 होबो right answer. Who is the author of the book Ignited Minds? Ignited Minds एही पुस्तकटीर लेखक कि अटंती. Ignited Minds एही पुस्तकटीर लेखक हेउचंती APJ Abdul Kalam. Option 1 APJ Abdul Kalam is your right answer. Next question. The Rana Pratap Sagar Dam is built across which river? Rana Pratap Sagar Dam केउ नदी ऊपर निर्माण करा जायछि river Chambal. ठीक अछि Chambal नदी हेबो right answer. Next question. Government separated East Bengal and merged it with Assam. Option 1 Assam कहि परियो. Next question. Which of the following gas is reduced in the reduction process? Oxygen. Option 3 oxygen have your right answer. Next question. The face of which animal is visible on the front cover of the Indian passport? Indian passport ro front cover re lion ro face hoichi. Option 3 lion have your right answer. What type of rock is called a sedimentary rock? Option C have right answer. Next question. The instrument used for recording earthquake waves is earthquake ro wave को record करिया पे के instrument को use करा जाए seismograph. Seismograph is your right answer.
Next question. How many number of states share their border with Odisha? Odisha रो border को चारोटी राज्य रो border कौन करिछि share करिछि. Option C. Next. Which type of climate does Odisha enjoy? Odisha रो जलवायु होछि tropical climate. Option A होगा right answer. Tropical climate. Next question. The river Budhabalanga has been originated from. ବୁଢାବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଶିମିଳିପାଳ ହିଲ୍ସ. ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଶିମିଳିପାଳ ହିଲ୍ସ କହିପାରିବା. ନେକ୍ସଟ. କ୍ଲଟିଂ ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ ଭେସେଲ୍ସ ଇଜ କଲ୍ଡ. କ୍ଲଟିଂ ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ ଭେସେଲ୍ସ କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଥ୍ରୋମ୍ବୋସିସ୍. ଅପସନ ଏ ଥ୍ରୋମ୍ବୋସିସ୍ ହବ ଏହାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର. ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ. Which type of mosquito when infected with the virus is the main cause of spreading dengue fever? କୁହନ୍ତୁ. Which type of mosquito कथा कह जाउची जेतेबेले when infected with the virus is the main cause of the spreading dengue fever, that is Aedes. Aedes mosquito. Option B is your right answer. Next question. Who was the first Indian to receive the Nobel Prize? प्रथम भारतीय जे कि नोबेल पुरस्कार पाइछंती रविंद्रनाथ टैगोर. Option A रविंद्रनाथ टैगोर है right answer. Next question. Which instrument is used to measure atmospheric pressure? Which instrument is used to measure atmospheric pressure? That is barometer. Barometer. Option B is your right answer. Next question. Which acid is found in vinegar? Vinegar रे आपनकर केउ अम्ल देखिया पई पाइबा? That is acetic acid. Option B is your right answer. Next question. The headquarters of the International Court of Justice is located at. International Court of Justice रो headquarter रहिछि Hague. ठीक अछि. ऑप्शन बी द हेग हबो यार राइट आंसर.